alphanumeric. Team, any questions in this? What is the difference between these two? No, sir. Good ना? Strings थोड़ा easy है as compared to other things. हाँ हाँ, स्ट्रिंग इजी है। एज ए स्काई, ये जरूरत नहीं है, इस डिजिट पता होना चाहिए बस आपको, इफ इसके अंदर इस डिजिट है या नहीं बेसिक। बट ये भी आपको आइट्रेशन पे पता चलेगा, अभी इस डिजिट फॉल्स आएगा क्योंकि आपके सारे एलिमेंट्स डिजिट नहीं है। अगर आप इसको आइट्रेट करोगे एक एक एलिमेंट पे, देन यू कैन कंपेयर ईच कैरेक्टर कि इट्स इज डिजिट ट्रू और नॉट। दैट्स इट बेसिकली। तो यार ये हो गया इज लोअर, मतलब इट विल कन्वर्टेड इनटू इज लोअर। सर आप इसमें से हमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दो जो मोस्टली यूज होते हैं, बाकी हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे इनको ना एक बार सारों अभी को। यूज होता है, सी आई नॉर्मली यूज दिस के फाइंड ओके एंड केस फोल्ड टू कंपेयर स्ट्रिंग्स। अगर मैं डेटा में चेक कर रहा हूँ, काउंट इज द वन, फाइंड हो गया, इसमें ends with, तो इंडेक्स इज द वन, is the one, is lower is the one, इसमें मेरे केस प्रिंटेबल, इस पे join, join is the one। Join में क्या करते हैं हम लोग? Join करते हैं ना दो आते strings को आते भी। आते उसमें भी आते, else strip is the one, partition replace is the one, और find एक ही हो गया, split is the one। These are the ones which we use normally out of these। फाइंड मैंने आपको बताया कि कोई स्ट्रिंग में कैरेक्टर चेक करने के लिए फाइंड यूज करते हैं। केस फोल्ड इज बेसिकली टू मेक इट टू एवरीवन, टू इग्नोर द केस, टू कम इट इनटू द सेम पेज बेसिकली, कि स्मॉल में तो स्मॉल में कर देगा सबको। काउंट इज नंबर ऑफ occurrences of any character in a string। index is basically checking a character in that string। is it is yeah, it's already, is digit is basically to check if there is any digit or not। is lower basically is used to convert it into lower basically। There was a lower also, just give me a minute। b dot lower, yeah, so b dot lower will give you everything in lower, correct। ये यूज हो रहा था कई बार, एंटायर स्ट्रिंग को केस फोल्ड की जगह, केस फोल्ड को ये भी यूज कर सकते हो आप, मतलब कि सब कुछ लोअर में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग वन स्मॉल। अपर में कर दोगे तो अपर में कर देगा वो। अब ज्वाइन, ज्वाइन करता है हमारा जा। सो लेट्स अज्यूम यू वांट टू ज्वाइन विद दिस डॉट ज्वाइन ऑन, तो उसने हर कैरेक्टर पे हमारा ज्वाइन कर दिया इससे। in each element of this it will join with a pipe delimiter basically, as you can see। Similarly, if I place a list here, then it will join, join does not work with, basically it works with string only, sorry, because वो string का attribute है, right, join, so it will join all the, basically join all the elements of a string based on this। I can replace it with comma also, so it will break the data। The purpose of using a join is basically if my string is having my name is Sahil, okay, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ देन इट विल डू दिस। बट इसमें एक चीज और भी है, व्हाट इट वाज, जस्ट गिव मी, ज्वाइन,
There was one more thing which I am missing it out. Actually. There was one more thing. काफी टाइम पहले यूज किया था जस्ट गिव मी लेट मी रिकलेक्ट माय थॉट्स ट्राई में हमने क्या करते थे और फिर मैं इसको यस तो देखो इसमें इसने इस लिस्ट को लिया माय नेम इज साहिल को सो सो आई ज्वाइंट द एंटायर डेटा ऑफ लिस्ट बेस्ड ऑन दिस कोमा सेपरेटेड ये आप टपल में भी कर सकते हो सेव द डेटा इज इन टपल आल्सो राइट दिस जॉइन कैन बी यूज्ड विद दैट आल्सो it will again show me the same output which is being shown down my name is Sahil एक साथ नहीं लिख सकते साहिल विदाउट एनी come कॉमा again एक वर्ड में एक सेंटेंस में माय नेम इज साहिल अच्छा हाँ हाँ वो क्या हाँ लिख लिया join attribute is used to convert everything into string based on the delimiter स्ट्रिंग ओके अगर मैं यहाँ पे ओके डिक्शनरी भी दे देता हूँ डिक्शनरी में वो कीज को लेगा बट नॉट वैल्यूज so let me take a key where is our key which we took so D so let's take D here hint not found okay yeah so join जैसे मैंने आपको बताया join basically works for string only right so it was integer so that's why it was not able to join basically integers because it's an attribute of string so it needs to have the keys in the string format only जैसे ये हमारा string था हमारा list हमारा string था तो it will work only with the string only so एक मिनट मैं इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ it works but ये string है अभी let me just replace this with this इसको देखते हैं कि ये वर्क करता है yeah it didn't work ना because integer was found अगर यहाँ पे मैं इसको string रखता हूँ then only it will work everything should be in the string for it to join okay team key dictionary sets tuples list it works with all basically the only thing is that value should be in the string format not in integer or any other value for join to work because join is a attribute of string not integer now let's do ljust okay ljust is basically how would I say let's come to ljust first basically let me explain the l strip and split and strip ljust we will come later with along with z strip l strip it basically strip some values from the left side so if you have a string which is your we have a b as a string right b is my name is Sahil so what it will do is b dot l strip I need to provide my here it will remove it from here I have not printed it just a minute.
Yeah, it removed it. Similarly, R strip will remove from the last my. Yeah, it was not there, that's why I didn't remove it. And L strip is done, R strip is done, then our replace. So replace will replace anything with a new value. Basically, if you want to do p dot replace old with new value, like my, yeah, it replace my with you. This is replace one. L strip done, L just we need to do. Replace is done, split is a good thing. Basically, this we need to remember it. So b dot split. So there's a string with you, and if you want to convert it into a list of that string, basically, like I have a string which is my name is Sahil, and I want you to store my name is and Sahil separately as a new element, then I will just provide the single quotes and it will store it in a list format. Yeah. So or it splitted the data based on this one, this space, and I provided the space here that I need to split my B into a list format with each element coming as separately. Because see, if you want to traverse it, if you want to mutable, basically, as I mentioned, like string is not mutable, but to make it mutable, right, you need to have it converted into string, right? Basically, converted into list so that you can modify any element. Because string does not allow you to modify any element inside it. So to modify it, this is the most important thing you need to remember it. Most important thing in string. क्योंकि अगर आपका डेटा सारा 90% स्ट्रिंग में ही होता है, अगर आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर मॉडिफाई करना है, तो यू हैव टू रिप्लेस इट इनटू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट, राइट? एंड देन यू कैन मेक इट अ लिस्ट string back again, like you have now your b, right, in the list format. Let me just store this into some another element. Now you can just convert it into z equal to str of y, then you can print your z. It will store in the list string str of y. Wait. Y is my list. Y is my list. At str of y is not working. Right. Yeah, you need to use join basically to convert a list into string. अभी मैं आपको बता रहा था ना कि our we can convert our set tuple dictionary into a string using join, right? So अगर आपके पास list आ गया, so you can easily use a back based on which space you want to combine the data into a string. So this will convert into your string. And अगर आप इसका type check भी करना चाहोगे, you will see it's stored in string format only. It's a string format. तो ये हो गया हमारा split. Now strip, as we discussed L strip and R strip, it will remove my from everywhere. अगर आपको लग रहा होगा कि confusion की R strip ने क्यों नहीं remove किया my, this will do from an entire data. Name is I. It will remove either from the front or back end everywhere. The my. Now Z fill and L just are pending. Let's go for L just now. So we have our Z dot L just. ये भी ज्यादा यूज नहीं होता, but let's go do it also.
So the first attribute here is कि हमें हमारे z जो स्ट्रिंग है हमारा माय नेम इज योर नेम इज साहिल में हमें 16 टाइम्स z ऐड कर ये हैश ऐड कर सो दैट्स द ओनली थिंग व्हिच इट डज मैंने प्रिंट नहीं करा है व्हाई इट इज नॉट प्रिंटेड भी यूज नहीं किया ये ज्यादा एडेड है हैश वैल्यू एल्जेस में सिर्फ न्यूमेरिक डेटा डाल रहा है। एलजेस में न्यूमेरिक डेटा जाता है नॉट श्योर इन नंबर स्पेसिस आता तो वैसे कैरेक्टर भी है। जाता तो है पता नहीं कुछ सिस्टम का होगा क्योंकि चलता तो है यार मैंने किया है प्रैक्टिस जस्ट डू अ गूगल टेक्स्ट बनाना है जस्ट वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसमें मैंने टेक्स्ट लिया बनाना क्या सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर जाता है ऐसा हो सकता है क्या लेट मी जस्ट सेड मी इन डालती या तो उसने लेफ्ट में नंबर स्पेस डाल दिया अब यहाँ पे एक डॉलर डाल दो या ओके तो वो एक ही स्ट्रिंग में लेता है इट डज नॉट टेक द एंटायर स्ट्रिंग बेसिकली इट नीड्स ओनली वन कैरेक्टर बेसिकली वन वर्ड टू वर्क विद स्ट्रेंज यार ये मुझे नहीं पता था ओके सो आर जस्ट भी वही काम करेगा सो दिस वाज a new thing for me yeah it's printed at the left okay okay यही है मतलब ये यूज नहीं होता ज्यादा टू फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स व्हाई आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट मतलब मैंने ना इसको डॉक्यूमेंट किया कभी भाई के लिए भी now zfill is it might little bit be used in your projects basically zfill basically कुछ फिलिंग करना बेसिकली डेटा में सो लाइक q डॉट zfill आपको जीरोस फिल करने होते हैं कभी कभार डेटा में मेक इट इन सिंक तो आई डू दिस
सेट हमारा क्यों है ये डेटा, या इसने हमारा फिल कर दिया 10 एलिमेंट्स तक। मतलब हमारा 10 एलिमेंट्स तक कंसिस्टेंट डेटा रहेगा, और उसमें से भी जो स्टार्टिंग में मिसिंग होगा इट विल ऐड जीरो टू दैट बेसिकली। सी समटाइम वी हैव पिन कोड राइट वन, जैसे इन इंडिया गुड़गांव पिन कोड इज 1222001, देयर आर अदर पिन कोड्स आल्सो, बट देयर आर सम टाइम्स you have pin codes of like 0, like 012201, so this is 6 digit zip code, right? तो अगर आप एक्स को एक्सेल में ओपन करोगे ना, इट विल ओनली शो यू 01, बिकॉज वो स्टार्टिंग का जीरो को निग्लेक्ट कर देता है। सो व्हेन यू आर लोडिंग दैट काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल व्हिच इज ऑलरेडी ओपन एंड उसको आप टेबल में डाल रहे हो, तो जेड फील्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, कि उसको जीरो अपेंड करना इन द बिगनिंग, बिकॉज आपका लॉजिक तो 6 डिजिट पे लिखा है। अगर उसके अंदर डेटा उसे 5 डिजिट मिलेगा देन इट विल नॉट प्रोसेस इट, राइट? एक्चुअल कोड तो हमारा ये है ना, दिस वन, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेटा, this and this have a difference, right? So that's why z filling, zero filling is important in basically healthcare data or some kinds of basically many kinds of data basically. Normally it is important in healthcare data only, कि जब zipter बनता है वो तो चलो चीज बाद में आएंगे, वो चीज का शायद प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगी, but this kind of transformation becomes very important in PySpark and SQL, z filling our data. ओके टीम, तो आज के लिए तो यही रखते हैं कलेक्शंस में हम, कि लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा है। Then we'll go to the next call. We will discuss about functions, lambda functions, classes, and then try catch. Once that is completed, we will go a little bit touch pandas also. Let me write down the things which we will do. Comprehensions, then our functions, the most important thing which is lambda functions, then try catch and classes, hooks, and little bit pandas. इसके बाद हमारा पाइथन थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। Okay, we will split it into 2 classes and 2 to 3 classes and complete this entire thing. And then we'll jump to SQL. विवेक, आपको कुछ कंसर्न है अभी जितना भी हमने पढ़ा है? नहीं साहिल, अभी तक फिलहाल ठीक है। देखो, आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है, इन चीजों के जो अभी बताया मैंने, DIR ये सारे बताए ना मैंने आपको, ये इनको खुद से प्रैक्टिस हम्म, करके देखना होगा एक एक को। और कुछ भी डाउट होगा नेक्स्ट वीक आप मेरे से लेके आइए या व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं आपकी मदद कर दूंगा कि ये इशू आ रहा है आपको, तो मैं बता दूंगा। सभी के नोट्स बनाने हैं आपको, अच्छा, मतलब इसके मैं आपको ये डेटा पूरा भेज देता हूँ पूरे हफ्ते का, तो ये हाँ, चीजें ये आपके, आपने एक बार भेज ये दिया। आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि देखो मेरे नोट्स होंगे ये पढ़ाने के लिए आपको, बट आपको अपने नोट्स बनाने हम्म, होंगे इंटरव्यू के पर्पज से, ये सब इंटरव्यू के पर्पज से लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जी, ठीक है विवेक? गॉट इट। चलिए, ओके, ओके सर। अब तो ये डेटा कहाँ पे मिल जाएगा, ये पाइचाम का आप लिंक शेयर करोगे, और अगर आई या कैन मैं गेट दिस डेटा। इसको इसको मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव पर, लिंक सर को दे दूंगा वो आपको, या सर ग्रुप बना देंगे तो मैं वहां शेयर कर दूंगा, जैसे हो जाएगा। आई थिंक सर चले गए। ओके, मैं एक बार स्टॉप कर दूँ रिकॉर्डिंग।